z. Okay. S letter sounds Z Yeah. and Z letter sounds S. Yes, exactly. So z को z नहीं बोलते, we say set. Okay. Okay. ठीक है. Then we have three more letters that are Hmm. a umlaut. Okay, a umlaut. Umlaut. Then Okay. yes, o umlaut, and then u Hmm. umlaut. These three letters are like different from English alphabet. And one more letter is there that is called S set. S set is written like वेट इसमें आ जाए तो मैं आपको सेंड करती हूँ, चैट पे देखना इसके. Okay. वेयर इज द चैट. इसमें चैट नहीं है क्या? है. दिस इज S set. Okay, this is one more letter, this is called S set. It is used when we have to use double S. जहां भी हमको किसी भी लेटर में किसी भी वर्ड में अगर हमें डबल एस यूज करना है, तो डबल एस इज इक्वल टू एस सेट. ओके. S. यस, Okay. आई सेंडेड यू. ओके. इन वट एवर Okay. वर्ड वी हैव टू यूज डबल एस. ठीक है. जैसे जैसे कोई भी लाइक रैंडम किसी में अगर डबल एस का वर्ड है, तो हम उसमें डबल एस नहीं लगाते, हम उसमें एस सेट लगाते हैं हमेशा. ओके. Okay. ठीक है. एंड ए umlaut is this. This is a umlaut. Okay. This is o umlaut. And Umlaut. this is Ow. u umlaut. U umlaut. U. ठीक है. ए ओ यू. यस. एंड इनके साउंड्स भी बहुत अलग हैं. ठीक है. जैसे ए umlaut का जो साउंड होता है वो होता है एओ. A. एओ. यस. ठीक है. दिस इज ए umlaut साउंड. Hmm. ओ umlaut का साउंड होता है, ओ umlaut का भी ओए ओए थोड़ा